Do you have any other questions for me? Number. Yes, do you have any doubt from? You don't have any other doubts, then write down the questions and you will have to answer that. Yes. You know, not give gift. Write down the questions. We will discuss the answers, and then you can write down the answers. Yes, Doll's House questions are clear. Do you have any doubt for me in from the first two chapters? Gift of Magi and Doll's House. They are clear. Summary is clear. All the questions you can answer. You can extend the answer up till the number. Like if you get the question for 4 marks, 5 marks, you can extend the answer that you know. That next chapter was Pattern in the Cage. Do you have any doubt for me in that? All right. First of all, Parrot in the Cage में आपका mostly only 3 or 4 characters have been mentioned, not purely but partially. Only Rukmani's story was prominent throughout the chapter. रुक्मणी की जो कहानी पूरे चैप्टर में आपको वही बताई गई है. उसमें स्मॉल कैरेक्टर्स जो हैं, वन इज द पैरट, हर पेट. उसके अलावा एक ग्राम सेलर जिसने उसे ये बताया कि आपका जो कलेक्टर है वो यहाँ पर आएंगे, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड उसने ही जब कलेक्टर आया था, बहुत सारे लोग जब एक साथ भागे थे उसके पीछे, तो उसने ही उसे उठाया था जब वो गिर गई थी. And the last one is her friend who saved her. What was her name? Her name is mentioned. Her friend's name is mentioned in the story. Need to remember that. First question will come that who helped Rukmani and how. Acha, how did she help? You know the answer. Can you answer this question that how that friend of Rukmani helped her to escape from Lahore? She mentions the short name in the story, that is Fato. उसने फतो, हाँ, पूरा नाम मेंशन नहीं है. फतो उसने लिखा है
because the story is on the prospect of रुक्मणी. रुक्मणी के point of view से बताया गया है. तो रुक्मणी के जो friend थे उसने short name mention किया है, that is Pato, and Pato helped her to escape Lahore. How did she help her to escape Lahore? How did she help her to escape Lahore? This passage is very much important. ये जो passage आपके इस chapter में है ये बहुत important है क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका story based. In that passage, it is mentioned that what is exactly going on around during the partition period and what all the people that were the refugees in the respective countries have faced. क्या-क्या चीजें वो face करके refugee बने हैं दूसरे respective country में जाकर, वो उन्होंने इवेंट वहां पर डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट इवेंट दैट ही सेड वाज burning. The houses were burning, the people were burning. Basically, the people who were alive were set to fire. जो जिंदा लोग थे उनको भी जला दिया जा रहा था. ठीक है, ऐसे ही घर जला दिए जा रहे थे और यही चीजें वहां पर डिस्क्राइब की गई हैं इन डिटेल इन हर ओन वर्ड्स. लाइक शी इज स्पीकिंग, वो खुद से बता रही है. इस तरह के वर्ड्स मुल्क राज आनंद ने यहाँ पर यूज किए हैं, जिस तरह वो खुद से एक्सप्लेन कर रही है कि क्या क्या चीजें उसने देखी वहां पर. एंड विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड फतो ने क्या किया, उसे बुर्का दिया बिकॉज ओनली मुस्लिम्स वर सेफ इन अराउंड दैट प्लेस in Lahore. So she gave her a burqa, and in that burqa she escaped. Somehow she escaped from Lahore boundaries, and from that boundaries when she came to India, she came to India in Amritsar. She was residing in a refugee camp in Amritsar. उसके पास कोई भी पोजेशन नहीं था, उसके पास थोड़े जो चेंज घर पे रखे हुए थे, कोई सामान वो नहीं लेके आई थी. थोड़े से पैसे उसे अपने पास, उसके पास जो पैसे थे या फतो ने शायद उसे कुछ पैसे और दिए होंगे, वही पैसे वो लेकर अमृतसर आई. नाउ द थिंग इज ऑब्वियसली no matter how much money you have, there is a limited time duration up till it will help you, right? तो उस ड्यूरेशन में जब तक उसके पास वो पैसे थे तब तक वो ठीक थी. लेकिन पहली बात वो बूढ़ी हो चुकी थी, दूसरी बात वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत मुश्किल था. शी वॉज अ मेड इन लाहौर, शी यूज्ड टू डू हाउसहोल्ड वर्क अराउंड द एरिया. तो इस तरह के जो काम होते हैं करने वाले लोग होने चाहिए ना, ऐसे रईस लोग होने चाहिए जिनके पास घर हो, जो झाड़ू पोछा करने वाली रख सके, राइट? उस दौरान इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों ही जगह इस तरह के लोग थे ही नहीं, या वो थे भी तो उनके पास जो लॉयल उनके नौकर थे उन्होंने उनको सेव करके अपने पास रख दिया था, वो कहीं जाने नहीं था. एंड दे वर बेसिकली फ्राइटेंड टू हायर समवन न्यू. ठीक है, क्योंकि उन्हें ये भी लग रहा था, अभी भी बहुत सारी जगह पर राइट्स हो ही रहे थे, तो उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो अग्रेसिव है, जो जिनके अंदर गुस्सा है, वो हमारे हाउस होल्ड में ना आ जाए. तो लोग नए लोगों को हायर करने के लिए भी डर रहे थे. जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उस तरह के जो वर्कर्स थे, लोगों को तुरंत से नहीं हायर किया जा रहा था. अगेन फॉर दिस रीजन basically the economy was very depleted at that time for both the countries. पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी. पाकिस्तान तो नई कंट्री बनी थी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा उस टाइम डिप्लीट हो गई. ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि रुक्मणी कैसे वहां बाहर निकाला, तो आपको वो पैराग्राफ पूरा मेंशन करना है. बिकॉज इफ यू मेंशन दैट पैराग्राफ, आपके पास देखो आंसर तो सिर्फ एक लाइन का है, दैट हर फ्रेंड फतो हेल्प्ड हर बाय गिविंग हर अ बुर्का एंड हेल्पिंग हर टू एस्केप फ्रॉम लाहौर. ये एक दो लाइन का आपका आंसर है, लेकिन जब एक्सटेंड करने की आएगा आंसर आपका 3 नंबर 4 नंबर का हो सकता है. सो यू नीड टू मेंशन दोस इवेंट्स दैट लेड टू हर एस्केप. ठीक है, कि वो इवेंट्स आपको मेंशन करने हैं जिसकी वजह से उसे लाहौर छोड़ के आना पड़ा अमृतसर. ठीक है, तो वो इवेंट्स आप मेंशन करेंगे कि किस तरह वहां पर राइट्स हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा था, लोगों को जलाया जा रहा था, घर जलाए जा रहे थे, किसी भी हिंदू को वहां पर रहने नहीं दिया जा रहा था. पाकिस्तान में रिस्पेक्टिवली किसी भी मुसलमान को यहाँ इंडिया में नहीं रहने दिया जा रहा. तो वो पूरा जो आपका लड़ाई वाला सिचुएशन था वो आपको मेंशन कर. अंडरस्टूड? Any other questions that you can come up? चैप्टर का समरी आपको पता है? चैप्टर का समरी पता है? Yes. Can you write the summary at least in one page? One page लिख पाओगे?
नहीं लिखा होगा। Summary पता है? Can anyone stand up and tell me the summary? In your own words, describe how much you can write in the summary. Like, no matter how short it is, you can describe it in your own words. Your registration has started, okay? You will get the date sheet now. You need to prepare for your examination. चिट के भरोसे मत रहो. All right. At least know that much. देखो, knowledge कम से कम इतना रखो कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या लिख रहे हो. बच्चे क्वेश्चन आपको चैप्टर के नाम के साथ नहीं देगा और उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा. क्वेश्चन का आंसर कौन कहाँ लिखा? देख लेना, जैसे मैंने पढ़ा दिया अपने तरफ से. Have any doubt you can ask. ठीक है. See, in this chapter, only 3 questions are very much important. ठीक है. First question, the summary. Second question, why did Rukmani had to come from Lahore to Amritsar? इसका पूरा इवेंट आपको डिस्क्राइब करने के लिए 4-5 क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बता देगा, लेकिन इन द एंड आपको यही बताना है कि लाहौर से वो अमृतसर क्यों आई, कैसे आई, क्या करने के लिए. ठीक है. मेंशन करोगे तो एक्सटेंड करने के लिए मटेरियल हो जाएगा, नहीं तो आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे आंसर. ठीक है. आपका आंसर 2 लाइन 3 लाइन में ही खत्म हो जाएगा, आप बढ़ा नहीं पाएंगे आंसर. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन यही है कि आप व्हेन द कलेक्टर अराइव्ड डिड शी गॉट एनी प्रॉब्लम सॉल्व्ड और नॉट. तो मुल्क राज आनंद जहां पर एंड किया है इस चैप्टर को, अकॉर्डिंग टू देयर वाज एन एंडिंग, because basically even the government was not having that kind of power at that moment that they can help so many people, so many refugees that they come. तो उनको भी नहीं यहाँ पर उतना पावर था. उन लोगों को बेसिकली नई गवर्नमेंट यहाँ भी फॉर्म हुई ना, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी. सो द पीपल हु वर गेटिंग द पावर, दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज द पावर. ठीक है. उनको पता नहीं था कि हम इस पावर को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे यूटिलाइज करने के. Nobody was there to guide them to utilize those powers. तो इसी वजह से दोनों ही तरफ से नॉर्मल पीपल की और जो गवर्नमेंट की था, वो लोग भी सारे के सारे कहीं ना कहीं मजबूर थे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे उन रेफ्यूजीज के लिए. ठीक है. It took a very large amount of time for the people to come out of that scenario. तो जो हमारा पार्टीशन था, उस पार्टीशन से जो हमने फेस किया, जो हमें लॉसेस हुए, से निकलने के लिए हमें काफी टाइम लगा. ठीक है. सो इफ यू लुक बैक दिस क्वेश्चन that whether Rukmani got any help or not, she did not get, because the collector was himself busy to get all the things done, and there were a lot of people who were needing the help from him. बहुत सारे लोग थे जिन्हें हेल्प की जरूरत थी. आपने वहां पर पैसेज में पढ़ा ही होगा. There was a huge crowd around his car. Okay, so as I was telling कि आपका यहाँ पर जो इवेंट है, ये वहां पर इतना बड़ा क्राउड था कि बेसिकली पुलिस को डंडा मार के जाना पड़ता था. ठीक है. If we turn up to that event, we can see how Rukmani gets hurt and how disappointed she is. But even in that disappointed, the only thing she had was her parrot, and she was thinking about the parrot to distract all these negativity. यही लाइन इसने लास्ट में जो यहाँ पर लिखी है कि बेटा तुम्हें भूख लग रही हो, चलो कुछ खा लो. Must be hungry. This is the last line that said after getting disappointed from not meeting the collector, from not getting any of the solutions from her problems. So the last thing that she said here in the chapter's end is that she is taking care of the parrot, is her responsibility by the moment till she can do that. Okay? All right.
Now this chapter ends. इसके बाद अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ऐसा मत कहना कि पढ़ाया नहीं या पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या था हमारा पैरेट इन द केज के बाद? पैरेट इन द केज सीधा एनिमल फार्म चले गए तो एनिमल फार्म का मैंने बहुत डिटेल तुमको दे दिया है, तो नोट्स ले लोगे हाँ, किसी के भी पास ले लो बच्चे, बहुत सारा नोट्स मैंने वर्क ऑफ आर्ट। ओके, वर्क ऑफ आर्ट में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिमेम्बर द नेम्स ऑफ वर्क ऑफ आर्ट आर्टिस्ट कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो नाम है वो नाम जो है दोस आर रशियन नेम्स, ठीक है, एंड रशियन नेम्स है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, उसका स्पेलिंग अलग होता है, सो इट इज बेटर टू रिमेम्बर द नेम्स, ठीक है। इसका मैं लिखवाई देती हूँ, इफ आई कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। Okay, yes, you can write this down. I found the list here. The list of characters from the work of art. This is not the same. All right. What was the name of the child in the work of art? Yes, I asked you a question. What was the name of the child in a work of art? नहीं, गुस्सा नहीं आता मुझे, सिर्फ इतना लगता है क्या लिख के आओगे। All right, write down the character list. First, Sasha Smirnov. Yes. Yes, the doctor's name. Can you remember the doctor's name? Huh? Sasha, yes. Sasha was the child. Yes. ऐसे बोल दे, लिख लोगे? Sure about that. Okay. Kaushal Kaur. Right now. Kaushal Kaur.
Partial of. यस साशा के अंडर अगर आपके पास जगह है तो आप लिख सकते हैं साशा के अंडर उसका कैरेक्टर के बारे में लिखिए यस साशा के अंडर लिखिए साशा वाज द चाइल्ड साशा वाज द चाइल्ड whom Sasha was the child whom Dr. Kaushikov saved 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 from an ailment saved from an ailment from an ailment illness saved from an ailment and he and her mother या कॉमा करके he and her mother and मत लगाइए वो बार हो जाएगा he and her mother sorry his mother he and his mother were very thankful were very thankful were very thankful because were very thankful because Sasha was the only son Sasha was the only son of her mother of his mother who would take over who would take over who would take over his father's business his father's business his father's business he had recently lost his father he and his mother were running the business he and his mother were running the business together he and his mother were running the business together now write down under Dr. Kaushikov he was the doctor yes. Kaushikov के अंदर लिखिए he was the doctor who helped many poor people in their time of need in their time of need for medical attention with no high order fees fees with no high order fees
He was happy to see. He was happy to see. He was happy to see Sasha. He was happy to see Sasha healthy, healthy, but was was perplexed, perplexed to receive the gift, perplexed to receive the gift, perplexed to receive the gift, because perplexed to receive the gift because the art that was depicted, the art that was depicted the art that was depicted, the art that was depicted was not appropriate, was not appropriate, was not appropriate for a doctor's office, was not appropriate for a doctor's office, was not appropriate for a doctor's office. Yes, write down the next one. Who did the doctor pass his candelabra? Who was the next one to get the candelabra? डॉक्टर ने किसको पास ऑन किया था कैंडेलेब्रा? लॉयर. Yes, write down the name of the lawyer. That is Oho. नाम है Oho, the lawyer's name. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा lawyer. Yes, UHOV. Oho. Yes, he was the lawyer. Oh, he was the lawyer, comma, a friend of Dr. Koshukov. He was a lawyer, comma, a friend of Dr. Koshukov. Full stop. He was the first one. He was the first one. He was the first one who came to doctor's mind. Came to doctor's mind. Came to doctor's mind. Who wanted to give the candelabra. Who wanted to give the candelabra to someone else. But to someone else. Full stop करके आगे लिखिए but he did not receive the gift. He did not receive the gift wholeheartedly. He did not receive the gift wholeheartedly. Wholeheartedly.
wholeheartedly and pass on wanted to pass it on and wanted to pass it on since since his mother since his mother sometimes since his mother sometimes visited his office since his mother sometimes visited his office and and he did not wanted he did not wanted to embarrass the staff members. He did not wanted to embarrass the staff members. Alright, let's end it here and in the next class we can continue.